Assalamu alaikum everyone. Welcome to yet another episode of the famous for भाई चारा. आज का आई थिंक हम लोग का मौजू जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा होपफुली. हमेशा हमारे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं. आज हमारा ज्यादा फोकस होगा ऑन porn, specifically men's relationship with porn, how we view it, what are some of the क्या कहते हैं modern day challenges या उसके अगर कोई advantages या disadvantages हैं. और स्पेसिफिकली के पॉइंट जो है एक तो हमारी उसके साथ क्या रिलेशनशिप है प्लस हमारी वो रिलेशनशिप में किस तरह वो इम्पैक्ट होती है. एंड बिकॉज लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट एडिक्शन, so there's also the element of how porn as an addiction could be an issue, but at the same time it also leads to some potentially positive um, benefits or potentially positive outcomes. सो आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा जो है आज स्ट्रक्चर इस तरह रहा है कि बिकॉज दिस इज अ वेरी हीटेड टॉपिक और इसके ऊपर यूजुअली आपको हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, बट देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल. सो आई विल थ्रो द टॉपिक टू द फ्लोर. और आई थिंक हम शुरू इस बात से करते हैं कि हमारी जो है एज मैन और स्पेशली पाकिस्तान में हमारी क्या रिलेशनशिप है पोर्न के साथ, what it does for us, or maybe how we experience it and why we watch it, because that's something that I think women and generally people want to understand. So मैं इसके ऊपर आई थिंक शुरू में तो ये कहूँगा कि द वे वी एक्सपीरियंस पोर्न, मेरा ये इसमें है कि आई डोंट, इट्स नॉट द सेम एज द वे दैट वी एक्सपीरियंस सेक्सुअल इंटरकोर्स. एंड आई थिंक इसके अंदर काफी हिस्ट्री वगैरह भी आ जाती है, बट मुझे ज्यादा ये है कि बिकॉज द वे दैट वी एक्सपीरियंस पोर्न इज वेरी डिफरेंट. इट्स मोर वॉयरिज्म, इट्स मोर क्या कहते हैं आर्टिफिशियल, और sex itself is tends to be a lot more natural. So yeah, that's the overall gist of it. So while we're talking about the relationship of porn with men, what's also very interesting is that there's a relationship of porn with even the state, that at a state level, while we're talking Pakistan, you are not allowed to access porn. That at a state level, there's an acknowledgement that this is something that we do not allow our population. So I just thought that I'll throw it in there, that it's considered to be a problematic thing in our society. So why is it problem? I honestly thought you were going to say there's also relationship of porn with women as well, but maybe we can क्या कहते हैं talk about that as well. I think because हमारी बात इसी के ऊपर अभी हो रही थी कि because, and I think you mentioned this as well, कि women tend to view I mean I don't know, I know both men and women watch it. बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है एटलीस्ट हमारे पर्सपेक्टिव से तो इट्स मोर ऑफ एन इशू फॉर मेन. आई एम श्योर इट्स एन इशू फॉर वुमेन एज वेल, बट मर्दों के लिए जो है एक जो तुमने बात की थी कि वुमेन व्यू इट एज लाइक इफ देयर मेन और हस्बैंड्स दे वॉच पोर्न, दे व्यू इट एज चीटिंग, राइट? बिकॉज उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है उनकी रिलेशनशिप पे जिसकी वजह से वो कह रही हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू यू थिंक दैट स्टेम्स फ्रॉम, वेयर डज दैट कम फ्रॉम? हमारे रेजिडेंट पॉर्न एक्सपर्ट उमर लतीफ बताएंगे. राणा साहब, मैं उमर लतीफ साहब नहीं, राणा साहब को लेकिन उस पे आज शुभ मस्जिद से जितना मैंने पॉर्न के बारे में इतना सीखा है, उमर राणा साहब हैं. और मेरा ख्याल है कि आई थिंक तमीम साहब हैज आस्क्ड अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, बट वेरी ब्रीफली अगर हम ये बता दें, वी गॉटन राइट इनटू इट, बट इफ वी गो बैक टू वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोग्रेशन ऑफ पॉर्न, ब्रीफली कि एटलीस्ट हमारी स्टेज वाइज जो है वो किधर से किधर शुरू हुई थी, और उसका सबसे बेहतर जवाब जो है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो राणा साहब हैं, वो अगर काइंडली हमें हमारे से जरा शेयर कर लें कि उनके जमाने में किस तरह ये शुरू हुआ था, उनके जमाने में क्या चीज जो है वो आम थी, which led to sort of exposure to this, and then we can sort of chip in everybody else. जी बिल्कुल. तो सबसे पहले तो एक मेरा जो थीसिस है इसके ऊपर वो ये है कि
रिसेंटली आप शायद नोट करें कि ऑलमोस्ट हर बड़े यूट्यूबर ने और पॉडकास्टर ने एक इसके ऊपर एक एपिसोड बना दी हुई है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है ना, आदमियों के लिए जो थोड़े से सहूलियात और सुकून देने वाली चीज़ें रह गई हैं, उनके पीछे भी हाथ धो के पड़ चुकी हुई है। तो आपको काउंटलेस एपिसोड्स मिलेंगे जिसमें पॉर्न की बुराइयां की जा रही हैं, पॉर्न को उसको न्यूरो साइंस के हवाले से प्रेजेंट किया जा रहा है कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। आपकी पूरी वायरिंग चेंज हो जाती है, पता नहीं लोगों के अंदर सुना है कोई वायरिंग शायरिंग हुई हुई है। तो मेरा इसके ऊपर, आई डोंट टोटली डिसएग्री विद दैट, बट आप एक चीज नोट करें, जैसे भी उमैर साहब ने कहा है कि पॉर्न को हम इक्वेट सेक्स के साथ नहीं कर सकते। उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी भी आपने प्रॉब्लम को उसमें डीप डाइव करना होता है, थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड देखना भी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉर्न, अभी हम वीडियोस की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो हिस्ट्री में हम देखेंगे, हमने जाना क्या नहीं। सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा पॉर्न की एडिक्शन डेवलप कर ले, ठीक है। देयर आर हाई चांसेस कि आप पॉर्न कैन लीड टू पॉर्न एडिक्शन, बट जरूरी नहीं है। आप जैसे बिल्कुल भी एडिक्ट नहीं है। तो जो बंदा वैसे ही वल्नरेबल है एडिक्शन के, ठीक है, उसको, वो अगर पॉर्न का एडिक्ट होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि पॉर्न बुरी है। आपको उस बंदे पे वर्किंग करनी है कि ये क्यों हर चीज का एडिक्ट हो रहा है। वो पॉर्न का भी होगा, वो सब्सटेंस का भी होगा, जो भी चीज उसको इजीली मिल रही है। तो मेरा इसमें थीसिस ये है कि पॉर्न इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, आपके इमोशंस को रेगुलेट करने का एक, मे बी नॉट द बेस्ट, बट एक आपके पास एक तरीका अवेलेबल है, जिसमें हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर, सोसाइटी जो है, वो समहाउ उसकी पोजीशनिंग इस तरह है कि जो पॉर्न देख रहा है वो साथ ही शेम और गिल्ट में भी मुब्तला हो रहा है, ठीक है। एक तो एक गलत आपके मुताबिक कोई गलत काम कर रहा है, साथ ही आप उसको एक और इमोशनली डैमेज कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग ए सिचुएशन जिसमें पहले उसने पॉर्न देखा और उसके बाद वो शेम और गिल्ट में भी चला गया। सो ये तो और काम खराब हो रहा है ना, यानी कि आप लोग तो थेरेपिस्ट हैं, तो एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो किसी इमोशनल इरेगुलेशन की वजह से वो बंदा पॉर्न देख रहा है और बार बार देख रहा है और उसके बाद वो शेम और गिल्ट में आ गया, तो काम तो बिल्कुल खराब हो गया। सो मेरी टेक इस पे ये है कि सबसे पहले तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 18+ है। अगर 18+ या लेट से 13 साल का बच्चा अगर स्पाइडरमैन भी देख रहा है, और मेरी फैमिली में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्पाइडरमैन देखने के बाद उन्होंने भी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की और नीचे गिरे और सर फट गए उनके, ठीक है। तो इसलिए हर मूवी का या हर कंटेंट का एक ऑडियंस होता है। तो बच्चों को आप दिखाएंगे तो वो तो जाहिर है उनको स्पाइडरमैन असली लगेगा, हल्क भी असली लगेगा, और बच्चे पॉर्न देखेंगे तो उनको असली लगेगी। तो अगर आप आपकी जो रिक्वायर्ड एज है उस पे आके अगर आप पॉर्न देख रहे हैं तो बहुत से ये मसले आपके लिए नहीं होंगे। प्लस अभी मसला ये है सबसे बड़ा, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया की जिस तरह एडवांसमेंट हो रही है और होती जा रही है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड होती जा रही है, और तो अब पॉर्न, इफ यू एसोसिएट इट विद masturbation also, तो एक्सेस टू पॉर्न इज वेरी इजी, ठीक है। यानी कि वो इवन के ट्विटर के ऊपर भी आप, मैं ढूंढ में ये रहा होता हूँ कि आज इमरान खान के साथ क्या हुआ, लेकिन तीसरी चौथी कोई ट्वीट आ जाती है जिसमें कि जी इसकी वीडियो लीक होगी और नीचे वीडियो का लिंक भी होता है और सारा कुछ उसमें पड़ा होता है। तो इवन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर के ऊपर भी आपको उसको साफ कर रहे होते हैं, लेकिन आप कहने का मतलब ये है कि बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को या जो लोग क्वालिफाइड नहीं है पॉर्न कंटेंट देखने के लिए या एडल्ट कंटेंट देखने के लिए, किसी ना किसी तरीके से उन तक पहुंच जाता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। पॉर्न इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट दैट अ ह्यूज प्रॉब्लम जो हम जितना हम महसूस कर रहे हैं। इन माय ओपिनियन वो अपनी जगह एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो जिस वजह से प्रॉब्लम है, वो जो इमोशनल इरेगुलेशन है कि एक आदमी क्यों देखना चाह रहा है आखिर, और अगर एक दफा उसने, लेट से व्हाट इज द लाइन जहाँ पे आप एडिक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो वो एडिक्शन पे काम करना आई थिंक ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू कि आप उस बंदे को और शेम और गिल्ट के अंदर डाल दें। ये मेरा वैसे थीसिस है ये इसके ऊपर। अच्छी आपने डिस्टिंक्शन कर ली कि एक एक एडिक्शन को आपने साइड पे कर दिया कि
हर हैबिट एडिक्टिव नहीं होती, उसका एक बंदे के टेम्परामेंट से भी ताल्लुक है। एक एडिक्टिव पर्सनालिटी जो होती है वो सब्सटेंस की भी एडिक्शन डेवलप कर सकता है, पॉर्न की भी कर सकता है, गैम्बलिंग की भी कर सकता है, सीरियली लव की भी कर सकता है। उनके लिए दे विल लैच ऑन टू एनी प्लेजरेबल डोपामीन सीकिंग, थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी। उसमें ये भी एक थ्रिल और न्यूनेस, नॉवेल्टी इसमें आ सकती है। तो उस चीज को एक नॉर्मल यूजर से हु I may see how, let's say, if someone is utilizing it for, I don't know if that might be for someone, it might be educational purposes, for someone it might be entertainment purpose, for someone it might be something out of boredom, who has, let's say, seen something once in a while, once in a week, once in a month, and that is not addictive. Then उसको अगर हम moral, ethical, religious dimension पे question नहीं करे, then why is that a problem, और how is that a Exactly. problem? मतलब एक पर्सनल एक्ट है फिर। वो तो फिर हम अगर रिलीजियस एंगल से कोई कह रहा हो कि ये शेम इंड्यूसिंग है, ये अच्छा उसमें, लेकिन मुझे फिर उसका दूसरा एक, आप जो बात कर रहे थे उससे मेरे जहन में एक दूसरा एलिमेंट ये आया कि लेट्स से कि अगर आई एग्री विद यू कि एक एज अप्रोप्रिएटनेस हर चीज की होती है कि बाय 16, 18, 20, 21 कब कौन सी चीज किसके लिए, कंटेंट क्या अप्रोप्रिएट है, कौन सा एक्शन बिहेवियर किसके लिए अप्रोप्रिएट है। बट लेट्स से कि अगर हम जिस कल्चर में हम जिस कल्चर से हमारा ताल्लुक है उसमें जो एक प्रोहिबिशन है फॉर सेक्स बिफोर मैरिज, whereas marriage is increasingly going to be pushed to a much later age for a boy to 24, 26, 28. Now from the time that, let's say, that they're hitting puberty and their sexual impulses are rising by 12, 13, 14, तब से लेके अगले 10 सालों के लिए हमने कहा है उन्हें कि there is no sexual activity that is permitted for you. So उस वाली चीज के लिए then our culture doesn't provide an alternative. Our culture is not saying कि आपको girlfriends अगर आपकी कोई है तो वो उसकी इजाजत है, या if you're with a girlfriend then engaging in any sexual act with them is permissible. So in that way, if you think about it, porn is उसकी एक, it's giving an alternative to a young person, which may be somewhat guilt inducing. However, it is catering for their sexual impulses, especially for someone who either cannot or does not have those social skills, or does not want to have a girlfriend, or cannot make a girlfriend. At least then they have some direction that can be given to their sexual impulses, which are very लेसर normal. ईवल है, लेसर ईवल है, आप उसको इस Lesser तरह evil कंपेयर कर सकते हैं। Yeah. तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसका अल्टरनेट प्रोवाइड तो करें ना पहले। आप कैसे रोक आप नहीं सकते इसको, हमें कोई नहीं रोक सका था, आप कभी भी नहीं कोई रोक सकता। तो अब इसलिए क्वेश्चन इज, और द माय थीसिस कि आप कोई अल्टरनेट दें, या फिर आप हलाल पॉर्न पैदा करें कि जी जब ये आप देख सकते हैं, इससे आपको एडिक्शन नहीं होगी, इससे आपको ये नहीं होगा। बट देयर हैज टू बी, और आप अभी और आप और नोट करेंगे भी, आपने जो बताया ना कि अगर किसी को सोशल स्किल्स नहीं है, बात नहीं कर सकता, या सोशली वो अप्रोप्रिएट नहीं है बंदा, कि वो जाके वो जो आजकल अल्फा मेल या कौन सा वो टॉप जी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी आप हाई वैल्यू मेल होगा तो उसको हाई वैल्यू फीमेल मिलेगी, दैट इज इवन क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। और साथ ही आपके पास एक अल्टरनेट है कि आपने एक वीपीएन से कनेक्ट किया, फ्री वीपीएन है, आपने रैंडमली भी जो भी आपके दिमाग में एक एक्स वर्ड आ रहा है वो आप टाइप करेंगे तो पॉर्न खुल जाएगा। कोई आपको किसी से ये भी नहीं पूछना कि वेबसाइट बताओ। तो इन दोनों अल्टरनेट्स में आपको एक चीज इतनी मुश्किल कर दी गई है, और वो जो टीन एज है उसमें आपको पता है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और आपको वो नहीं मिल रहा, और आपको नजर भी आ रहा है कि किसी सूरत में नहीं मिल रहा, तो आपके पास और ऑप्शन क्या फिर? अच्छा, इस पे ये जो ऑल्टरनेट वाली आर्गुमेंट है ना कि यस आई कंप्लीटली एग्री, और बिल्कुल आई थिंक आप दोनों ने ये पॉइंट बिल्कुल सही कहा है कि सोसाइटी में जो है रिलीजियसली कल्चरली आप देखें तो यही है कि यू कैन नॉट वॉच पॉर्न, यू कैन नॉट एंगेज विद इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शादी से पहले। और हर कोई ये कहता है कि देखिए जी सुन्नत ये थी, या पहले जमाने में ये होता था कि ऐसे लोगों की शादियां जल्दी कर दी जाती थी। अब इन मॉडर्न सोसाइटी ऑब्वियसली दैट्स नॉट वेरी फीजिबल, बच्चे को पहले खड़ा होना होता है पाँव पे वगैरह, वो एक डिफरेंट डिमेंशन आ जाती है। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट आई थिंक इज के वो एक तरफ आपको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे, आप शादियां भी नहीं कर सकते। अब उससे हो ये रहा है कि अब आप लोग की आर्ग्यूमेंट है कि यू नो सो porn becomes a safer alternative, right? Or it's not the safer but it's the only alternative.
मसला आई थिंक वही आता है, और वो मैं राना साहब आपकी जो शुरू की बात थी ना, जो इमोशन रेगुलेशन, और वो अब बात वही है मेरी उसके ऊपर आई थिंक काउंटर आर्गुमेंट ये होगी कि वो जो इमोशनल रेगुलेशन जिसे हम कह रहे हैं ना, अब देखिए बाकी एडिक्शंस, यस ऑल एडिक्शंस आर टेक्निकली कोई ना कोई इमोशनली डीप रूटेड इशू होता है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा होता, और बंदा एडिक्शन के जरिए जो है उसे अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक सेक्स विच इज कम्प्लीटली नेचुरल, उसके अंदर जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, तो इशू ये हो रहा था कि द वेरी थिंग दैट यू आर गोइंग टू which is going to alleviate your desires ends up becoming the very thing which is also damaging your emotions, because होता यह है कि because मेरा यह है कि देखिए फोन के साथ आपकी तीन चीजें जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। सबसे पहले ये, और इसका भी आप लोग ने जिक्र किया कि the expectations that we have for sex, right? Because porn के अंदर everything is much bigger, it lasts longer, उसके अंदर जो है there's no, आपने नोटिस किया होगा फोन के अंदर there's no relationship between the man and woman, और जो भी people who are engaged in, right? It's just that क्या कहते हैं, they're just at it, और उसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, बस इसके अंदर ज्यादातर फोकस होता है औरत के ऊपर होता है, बंदा तो उस पिक्चर के अंदर आउट होता है, राइट? सो that expectation of what is supposed to happen during sexual intercourse वो completely distort हो जाती है। दूसरा उसके अंदर जो इमोशनल इशू आपका आता है वो है कि दिस इज पॉर्न जो है ना इज नॉट क्या कहते हैं सेक्सुअल एजुकेशन। पॉर्न इज सिंपली सेक्सुअल वॉयरिज्म, कि आप किसी को देख रहे हो सेक्स करते हुए, और जब मसला यही होता है कि जब आप पॉर्न के अंदर इवन इफ यू डोंट बिकम एन एडिक्ट, if you've only watched porn for your sexual education, when you actually get married or when you actually have a relationship जिसके अंदर आपको engage करना होता है, तो it is so very different from what you have understood it with, or which is why there's so many relational issues आते हैं मर्द और औरत के दरमियान में, because मर्द की expectation कुछ और होती है, औरत की expectation कुछ और होती है, the guy just isn't able to understand how to address that or deal with it। और तीसरी चीज फिर ये हो जाती है कि आपके जो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको अपनी ग्रेटिफिकेशन जो है ना वो आपको सेक्स से मिलती नहीं है, वो आपको सिर्फ पॉइंट से मिलती है, विच इज वाई बहुत सारी आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही होती है, बिकॉज द मैन इज एडिक्टेड टू पॉर्न, और वो कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह वो फीलिंग्स या वो इमोशन जो है ना अपनी रिलेशनशिप में, लेकिन वो हो नहीं सकता, बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफरेंट रिलेशन, दैट्स कंप्लीटली वॉयरिज्म, दैट्स कंप्लीट क्या कहते हैं डिस्टोर्टेड, और इट्स बेस्ड ऑन लाइज। और जो एक्चुअल जो रिलेशनशिप होती है, जो एक्चुअल सेक्स होता है, उसके अंदर तो इट्स वेरी इमोशनल, यू आर इंटरलिंक्ड विद द पर्सन, उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, वो फिजिकल होती है। सो ये जो डिस्टोर्शन आती है ना, आई फील के आई एग्री के एडिक्शन जो है वो एक वो डजंट अप्लाई टू एवरीवन, बट आई स्टिल फील कि जो इमोशनल डिसरेगुलेशन आपकी पोर्न की वजह से आती है ना, वो इवेंचुअली लीड्स टू पोर्न एडिक्शन एज वेल, बिकॉज आपको समझ नहीं आती कि अपने आप को किस तरह ग्रेटिफाई करें विदाउट दैट। सो इन अ नटशेल व्हाट आई एम सेइंग इज कि यस, we say it is the only alternate and maybe that's what makes it safe, but what I'm saying is that only alternate is creating even more problems, it's actually making the original problem worse। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करूंगा। एक तो आपने भी जो नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, लेकिन आपने एक सेक्शन उसका एड्रेस किया है कि एक बंदा है वो रिलेशनशिप में है और वो पॉर्न देख रहा है, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, ठीक है? बच्चे हैं जैसे, ठीक है, अब उनको नहीं पता और उनके साथ जो उनका चल रहा है उनकी जिंदगी में, सो दे डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू गेट एनीथिंग, ठीक है? तो उसको हम डिफरेंट तरीके से एड्रेस करेंगे। जो आप कह रहे हैं दैट इज डेफिनेटली उसमें ज्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। सॉरी मैं आपकी बात इस पर काट, मैं ये कह रहा हूँ कि इवन जो उन बच्चों ने कभी किया नहीं है उनके लिए भी ज्यादा नुकसान है, बिकॉज उनकी पे एक्सपेक्टेशन ही क्रिएट हो रही है पॉइंट से, जब वो एक्चुअल बिल्कुल रिलेशनशिप उनकी होगी उन्हें तो पता ही नहीं होगा क्या करना। नहीं नहीं, आई एग्री, इसलिए मैं पहले कह दिया कि बच्चों के लिए तो है ही नहीं, ठीक है? अब आप इसका मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। आप फार्मूला 1 कार रेसिंग देखते हैं, वो क्यों देखते हैं? उसमें आपको क्या मिल रहा है? वो तो रियल लाइफ में नाश्ता की गाड़ियाँ होती हैं, आपके पास अपनी एक गाड़ी है, फिर आप वो इतनी फैंसी कार क्यों देख रहे हैं? तो इंसान के अंदर एक उसकी नीड भी है, क्यूरियोसिटी भी है देखने। तो पॉन्ड सिर्फ वो, आप जब F1 कार रेसिंग देख रहे हैं, आपने नहीं ये सोचा कि मैंने भी कल जाके एक इस तरह की कार चलानी है जो पिट पे आएगी तो उसके खुद ही टायर चेंज हो जाएंगे, खुद ही ऑयल चेंज हो जाएगा सारा। तो वो आपको पता है कि ये एक मॉडल
ट्रैक पे चल रहा है जिसका मेरी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो पॉर्न को भी अगर आप उस तरह देख रहे हैं फॉर योर एंटरटेनमेंट ओनली, देन इट्स नॉट बैड थिंग। ये मैं आपको कह रहा हूँ। और एजुकेशन एजुकेशन तो आई थिंक एजुकेशन आप दो दो दफा पॉर्न देख लेंगे, जितनी एजुकेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, अनलेस कि आपने उसमें इतनी ज्यादा पीएचडीज करनी है कि आप रोज की 3-3 घंटे उस पर लगा रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट। तो एजुकेशन इज नॉट द ओनली पॉजिटिव थिंग, और लॉन्ग टर्म नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन आपने 5 मिनट में देखे, आपको पता चल जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, प्रोफेशनल स्पोर्ट, एनी ऑफ दीज, दे डोंट डायरेक्टली, मतलब उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बाय दैट आर्ग्यूमेंट दे कैन को एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, स्टंट्स दैट्स आप व्हाट देख इट्स। रहे हो, किसी के आप टॉम क्रूज की मूवी देख रहे हो, उसके बाद आई मीन देखिए, रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, शाहरुख खान की सारी मूवीज देख लें, उन्होंने भी उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया रिलेशनशिप्स को। आप इंडियन रोमांटिक मूवी सारी की सारी देख लें, उन्होंने रिलेशनशिप्स को ज्यादा, आपकी जो पार्टनर्स हैं फीमेल, वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सलमान खान होंगे, आप शाहरुख खान होंगे, ठीक है, या आप वो क्या रिचर्ड गियर होंगे, या वो जो दूसरा सफेद बालों वाला आपकी बात नहीं कर रहा है, वो क्या है, वो क्लूनी जो है, ठीक है। तो वो भी तो एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट हुई है जो रियल लाइफ में नहीं है। सेम सेम इज द केस विद मेन, यानी कि हमने भी बचपन से जिनको देख रहे हैं, तो पॉर्न को आप लोगों ने इतना ज्यादा डिमोनाइज कर दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि पॉर्न सही है बिल्कुल, लेकिन आई थिंक उसको थोड़ा सा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सजा मिल रही है पॉर्न को, जितनी उसका कसूर है नहीं। पर लतीफ आज खामोश है, उन्हें कुछ खास। मैं खामोश नहीं हूँ, मैं इस वक्त सारों के जो है ना वो पॉइंट्स भी सुन रहा था, रिएक्शन भी देख रहा था, और मैंने देखा सबसे ज्यादा जो जो कहते हैं ना जरा ट्रिगर्ड थे वो राना साहब थे। इसके ऊपर उनके इमोशन से पता लग रहा था कि ही फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड हिम टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन on the particular lighter note, but on the other side, यार ये लोग हॉलीवुड भी सारे they are what are they selling? They're selling desire, जो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। एंड वी आर प्रिंसिपली प्लेजर सीकिंग इंडिविजुअल्स, हम हैं। और ग्रोइंग अप वो चीज, वो वाला एलिमेंट हमेशा हमारा ज्यादा होता है, वो विद एज थोड़ा सा जरा टेपर ऑफ हो जाता है, बट ग्रोइंग अप दैट इज द मेन थिंग। प्लेजर सीकिंग, रिस्क टेकिंग एंड अवॉइडेंस वाला एलिमेंट कम होता है। तो पॉर्न के नुकसानात तो हम सारों से सुनते हैं, और राना साहब ने बात की थी कि वाकई जितने आजकल, मैं भी इससे पहले पॉडकास्ट से पहले देख रहा था कि काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने जो है ना वो इसके ऊपर बात की हुई है, और इसके नुकसानात। तो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ the implications or the consequences of watching porn. ये expectation वाली बात तमीम ने की है, बिल्कुल ठीक है कि you have a particular sort of expectation, but once again the important thing is कि it is not necessary कि वो that can lead to affect your intimate relationship with your partner. There is a particular line of addiction, and it varies from person to person, but the general sort of understanding is if it affects with your daily functioning, and it comes always at a particular time, and that time is usually preceded, that particular time is stress inducing, और अगर आप सिर्फ उसके लिए अगर पॉर्न को यूज करें, दैट कैन बी हैबिट फॉर्मिंग, एंड दैट कैन सॉर्ट ऑफ लीड टू एडिक्शन। बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी कि अगर आप पॉर्न देखते हैं और उसकी वजह से जो है ना यू शुड बी शेम्ड एंड गिल्ट। एंड इसके ऊपर भी लोग कहेंगे कि जी आप उसके उसकी साइड ले रहे हैं, जो जो पॉर्न देख रहा है, और उसको शेम और गिल्ट करना चाहिए। बट हम हमेशा ये बात करते हैं कि शेम और गिल्ट करने से मसला हमारा आज तक खत्म नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, और आपने कोई खास लेवल ऑफ शेम और गिल्ट पे नहीं पहुंचेंगे जहां आप ये मसला खत्म कर देंगे। तो इसके ऊपर बात करना जरूरी है, और वही हम आज की तारीख में जो कर रहे हैं। सो पॉर्न आई थिंक इज, यस इट इज अ लेसर इवल, इन सम वेज इट इज ऑल्सो अ नेसेसरी इवल। ना आई आप मीन इंसान का अगर इसके से ताल्लुक How is it a necessary evil? Sorry. रहेगा ना, मतलब यार पॉर्न से पहले आई एम इमेजिनिंग सीडीज होती थी, सीडी से पहले मैगजीन्स होते थे, मैगजीन से पहले आई एम इमेजिनिंग मतलब एटलीस्ट रिटन फॉर्म में मैगजीन रिसाले होते होंगे, there would have been some communication of desire through letters or something. So that art form has always existed, but as it exists today, and the ease with which it exists, the access that it exists, I'm imagining that with AI it might even sort of, again, आप पूरा का पूरा इंसान के आप शक्ल बदल सकते हो, आप उसके फीचर्स चेंज कर सकते हो, a certain body can be presented which is very unrealistic. आप अगर आप just the other day I was reading कि a lot of
pedophiles, they're sort of taking celebrities in their older age, and they're using AI to convert them into children's sort of images or something like that. तो मतलब इस तरह से that's the technology will continue to impact के ये फॉर्म कैसे चेंज हुई है, लेकिन ये फॉर्म तो हमेशा से एग्जिस्ट की हुई है किसी न किसी तरह से, और लोगों का उस फॉर्म से कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है। अभी आपने बिल्कुल वो रहा देखा है। होगा जो फेसबुक ने मेटा ने वो किया था, मेटावर्स का एक कॉन्सेप्ट दिया था जो पता नहीं फिर एकदम बड़ा मशहूर हुआ और बंद हो गया। तो एआई प्लस मेटा, अगर आई एम श्योर इट विल कम बैक अगेन, तो आपने वो हेलमेट पहन लिया। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटीज की पिक्चर लेके उसकी एज चेंज करके, वो तो जब आपने अपनी यूनिवर्स ही अपनी बना ली है, उसके बाद तो आप जो मर्जी करते रहे। और आप अगर दूसरे कैंप में हैं, आप अपनी यूनिवर्स बना के उसमें आप जो मर्जी करते रहे। इवन दो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, अभी भी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आता है ना कि मेरा वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, आपका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी ने तो आपका वर्ल्ड ही डिफरेंट बना देना, उसी में बैठ के आप सारी जिंदगी बेड पे ही लेटे रहेंगे कनेक्ट करके सुबह से रात तक, या पूरी एज आप उसमें गुजार देंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जी सॉरी उमर साहब। नहीं, मैं वो जो तमीम साहब बात कर रहे थे कि हाउ इज इट नेसेसरी इवल, तो it does provide a form of release, right? And अगर वो एक necessary evil ना हुए, and if men are going about, and we live in a day and age where we work with women, और they are कहीं हैं, और अगर वो release अगर कहीं नहीं हो रही, and with all that pent up aggression and testosterone, there's more chance of inappropriate behavior if it's not there, अगर उस तरह देखा जाए तो। हाँ once again हम अच्छा हमेशा अगेंस्ट की बात करते हैं, लेकिन प्रो भी तो बात है ना इसके अंदर, कि अगर वो वाली रिलीज नहीं है, उसके नुकसानात हैं, वो आपने ऑलरेडी बयान कर दिए हैं, एंड आई एम विद यू एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री टू सम ऑफ देम, बट उसके प्रोज भी कुछ हैं, और उसको उस प्रोज को जो है, मैं वही कह रहा हूँ, हम उसकी प्रोज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, वी आर प्रेजेंटिंग द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट एज वेल, यार ये भी चीजें जरूरी है। और जिस तरह राणा साहब ने एक बात शुरू की थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म। Now we need to understand what are we coping for when we are watching porn. वो एक ज्यादा जरूरी चीज है उसको देखने के लिए कि किस चीज के लिए हम कर रहे हैं। Let's say social anxiety, and अगर social anxiety की वजह से we are watching porn, and we get that particular release and feeling, and it's all okay, and we're not anxious anymore, because after getting that release, at least for a short while, men relax, and that's the whole point of it, right? But it doesn't solve the problem of you being socially anxious, ठीक है ना? तो that's the problem that we're trying to sort of address, not particularly the porn is the behavior। and हमेशा ये चीज हमने पहले भी ये शायद बात की है, we always look at behavior, we tend to look at behavior, we tend to look at behavioral change, and we never look at the symptom. Depression is, once again, is a behavior symptom. What is the actual cause of it, वो पता होना हमारे लिए जरूरी है। Addiction is a coping mechanism, and coping mechanism for what exactly? ये चीज हमें पता होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि porn ठीक है, लेकिन porn के कुछ benefits हैं, especially for those particular people, which are quite a lot, who don't have partners, who may not have regular, I'm pretty sure, who may not have regular sexual experiences, to get that particular sort of release, that natural release that both individuals, male, female, require for that matter, right? So इस चलो चीज को जरूर, इसलिए मैं इसको नेसेसरी इविल कह रहा था। से चलें, जो उमर तुम बात कर रहे हो कि जो दो बेसिक इम्पल्सेस होती हैं वो एग्रेसिव या सेक्सुअल होती हैं, तो अगर हमने सेक्सुअल इम्पल्सेस को सोशली इनअप्रोप्रिएट समझ के उनको बिल्कुल बंद कर दिया, उन्हें आउटलॉ कर दिया, उनको फैमिलीज में हमने बात भी नहीं करनी, ना कोई सेक्स एड है, ना कोई उस तरह से इट्स इनकरेज्ड इन एनी वे, मतलब यहाँ तक कि वो दैट अंडरस्टैंडिंग विच इज के एक दफा जब आफ्टर अ सर्टेन एज, इफ अ फादर इज ऑफ अ सर्टेन एज, वो अपनी बेटी के साथ भी जो है एक सर्टेन डिस्टेंस रखे, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से नहीं हक करना है, नहीं करना है। एंड सो आई मीन हमारी सोसाइटी जो जितना जिस तरह के इसके एटीट्यूड सेक्सुअल किसी भी सेक्सुअल चीज के बारे में है, देन उस फ्रॉइडियन लिहाज से तो हम उसके ऊपर एक जितना बड़ा डैम लगा रहे हैं, वो चीज फिर या तो एग्रेसिव इम्पल्सेस में निकलेगी और इन देन सेक्सुअल इंट्रूजन में निकलेगी। आई this is a disclaimer, just trigger warning if someone doesn't want to listen to this part, but
but then there will be lots of sexual intrusion that is possible, which we'll see that jin groups mein sexual impulses ko jitna roka jata hai, for example, then that will show up in other ways. For example, lots of religious communities mein wo phir then that might come out in sort of that sexual abuse towards students that they're teaching. Yeah, madrasas mein, for example, a lot of people who I worked with who've been through the madrasa education, there's the sexual sort of the jitni difficult experiences unke huए में हैं. Then similarly, my impression is that a lot of my clients who've lived in difficult places like Saudi Arabia, jidhar sexual attitudes पे बहुत पाबंदी थी, especially आज से 20 साल 25 साल पहले, there's been a huge incidence of sexual violations there within families, between family members, between siblings, between sort of so I mean I would feel then that जो अभी तक एक point आया है कि इसका एक regulatory अगर एक function हो भी सकता है, तो एक वो it acts as a release, कि अगर हम उस रिलीज को अगर बंद करेंगे, आउटलॉ करेंगे, हर तरफ से उसके गिर्द हम एक डैम बना देंगे और हम कहेंगे कि ये चीज कहीं से नहीं बिल्कुल ही हम प्रोहिबिट करेंगे उसे, then that just comes out in the wrong ways then. You know, it's very interesting. ये जो बात कर रहे हो ना, this argument feels a lot like the argument जो हो रही होती है on tobacco, alcohol, or any other substance, marijuana वगैरह आप ले लें. Because we essentially what happens is कि जो हमने भी बात की उमर लतीफ के you know, it becomes a necessary thing because ultimately we're trying to find out why the person is using it to cope. राइट आप अगर टोबैको का लें, आप सिगरेट अगर पीते हैं तो उस वक्त बंदे को स्ट्रेस होती है, उसे चाहिए होती है, वो उससे रिलीज मिलता है, वो निकोटीन उसकी डोपामाइन रिफ्रेश करता है. बट आई वुड हैव द सेम आर्गुमेंट अगेंस्ट पोर्न एज आई वुड फॉर टोबैको, कि एक आपने सिगरेट पी लिए ठीक है, उसके बाद क्या होगा. And I feel that's where that's how porn needs to be evaluated as well. First, I mean, in two ways. First, do the benefits outweigh the disadvantages? That's the first thing. And second thing, does the benefit that it provides, does that benefit sustain in the long term? अब पहले पॉइंट पे ये है कि आई डोंट फील के पोर्न के यस आई थिंक इनिशियल जो है अगर आपने एक आध दफा देख लिया है और उसे आपको कुछ सीख लिया है, अराउजल मिल गया है आपको थोड़ा सा जो है, एंड देन इफ यू आर समहाउ वन ऑफ दोज लकी पीपल के, बिकॉज अगेन राणा साहब भी बात कर रहे थे कि नेचुरल अर्जेस तो हर एक के अंदर होती हैं, हम लोग हमने जाना तो है, you know, हम लोग pleasure seeking creatures हैं, we watch porn a few times, right? And then instead of us relying on porn, हम वो जो desires या वो जो arousal है ना, वो हम किसी बंदे या उस बंदी के अंदर जो है ना, हम वो मतलब कि we basically divert our energies towards that person, because ultimately that's the function of arousal. I don't want to sound very conservative या जो भी है, लेकिन ultimately arousal का मकसद ये होता है कि relationships बने. आपकी जो टोटो के साथ रिलेशनशिप होती है और जो किसी औरत के साथ होती है, दे आर नॉट द सेम. अल्टीमेटली अगर आप वो एनर्जीज जो है, सो दैट्स द बेनिफिट आई सी, कि अगर आप क्या कहते हैं पोर्न देख के जो एनर्जीज अगर पार्टनर के अंदर लगा रहे हैं और फिर एंड दैट्स वेयर द एनर्जीज आर गोइंग, देन आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. सो दैट इज द ओनली सिचुएशन वेयर आई वुड सी, बट देन उसके अंदर फिर आपकी पोर्न के साथ रिलेशनशिप ही रहेगी, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप फिर किसी और इंसान के साथ हो जाएगी. बट जहां पे वो नुकसान आता है, जो डिसएडवांटेजेस होते हैं कि आप वापस उस पर जाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और प्लस तीसरा जो उसमें नुकसान है, जो अभी उमर तुम बात कर रहे थे, जो क्या कहते हैं अबाउट पीडोफाइल्स एंड व्हाट नॉट, पॉइंट इज कि जब आप पोर्न के अंदर आप घुस जाते हैं ना, देन यू फिगर आउट देयर जॉनर्स. देयर आर डिफरेंट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट रियली मेस्ड अप जॉनर्स, और वो जब आप उस रैबिट होल के अंदर लोग चले जाते हैं ना, तो उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस के भी इशू आ रहे होते हैं, उसके अंदर आपके जो है क्या कहते हैं, यू गेट एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स. एंड देन द थर्ड पॉइंट इज के ह्यूज डिसएडवांटेज के, यार लेट्स बी ऑनेस्ट, 18 प्लस तो राणा साहब हम कहते हैं, लेकिन कौन हम में से जो है जिसने 18 साल की उम्र वेट करके जो हमने देखे हैं, वो ऑल ऑफ अस आई नो फॉर फैक्ट, इवन हम लोग के जमाने में भी जो थे, जब पोर्न वाज नॉट एज रेडली एक्सेसिबल, हम लोगों ने फिर भी कहीं ना कहीं 12 या 13 साल की उम्र में जो था ना कहीं हम लोगों ने एक्सेस कर लिया था. इट वाजंट एज फ्रीक्वेंट. अब आजकल के जमाने में तो आप 12 साल 10 साल के बच्चों को देखो, उन लोगों के पास वो उन्हें आराम से मिल जाता है, जिस तरह भी आपने कहा सर्च मारो वो मिल जाएगा. सो पॉइंट इज कि जब इतनी ज्यादा आपकी वो चीज डिस्टोर्ट हो रही है. एनीवेज, ये तो हो गया एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेज. लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा होता है, ठीक है, आप एक नेसेसरी इवल है जो आपको अभी चाहिए है, आपको इस वक्त एक रिलीज मिल जाता है, बट दैट रिलीज डज नॉट स्टे
फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. आपने एक दफा रिलीज कर लिया, अगले दिन आपको फिर से तलब होगी, बिकॉज अनलाइक सब्सटेंसेज दिस इज अ नेचुरल अर्ज. ये आप इतनी आसानी से नहीं इसे आप किसी और चीज में लगा सकते. द ओनली वे दिस कैन बी रिजॉल्व इज थ्रू अ रिलेशनशिप विद अनदर ह्यूमन बीइंग. और बात वही, आजकल की जो टेक्नोलॉजी और जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, दैट्स माय पॉइंट. जिस तरह अभी राना साहब आप भी कह रहे हैं बेड पे लेट के बंदा हो जाएगा. I mean, ultimately, the point of sex is for us to be able to connect. And बात वही है कि हम coping mechanism इसलिए कर रहे होते हैं because we are unable to connect. मैं आप लोग सारे से बातों से agree कर रहा हूँ, लेकिन I feel like कि आप लोग मेरी argument के ऊपर आ रहे हैं कि हम लोग ultimately relationship के लिए ही करना चाह रहे होते हैं, और वो क्योंकि हमें नहीं मिल रही होती लिहाजा हम टोटो के ऊपर जा रहे होते ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि एक डिल्यूजन ऑफ चॉइस जो क्रिएट हो रही है, दैट यू कैन एक्सेस whoever you want to be with, who may be that picture perfect of जो who is an object of your attraction. वो जो एक पॉर्न आपको उस चीज पे इनेबल कर रहा है कि आपको वो इतना रेडली एक्सेस हो सकता है, उसको आप रिलेशनली कैसे ट्रांसलेट करोगे ना. मतलब अच्छा, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रेफरेंस है दैट व्हेन आई वाज इन द यूएस, उस वक्त में आई मेट समवन हु हैड डन अ समर इंटर्नशिप इन वन ऑफ दीज स्टूडियोज जिधर पॉर्न प्रोड्यूस होती थी. और उसने मुझे इस तरह की कोई बात बोली कि उसने कहा कि यार जैसे आम मूवीज प्रोड्यूस होती हैं, इट्स अ प्रॉपर स्टूडियो, पीपल कम इन, दे आर एक्टर्स. कभी किसी दिन किसी किसी की तबीयत ठीक नहीं, किसी की कुछ नहीं है. समटाइम्स व्हाट यू वॉच ओवर अ 10 minutes इज मेड ओवर many many days. They all have their very natural reactions. Sometimes something is not working for one of them, it's not working for the other person. Sometimes their pills don't work, sometimes other things don't happen, and it's done with lots of cutting, it's done with a lot of editing, it's at the end of the day it's acting. But जब आप जिस चीज को कंज्यूम करो एज एन एंड कंज्यूमर, वो वाली चीज जो है, then it's presenting an expectancy of the sexual process to work between a man or a woman, or a man and a man, a woman and a woman. It's creating that expectancy, which when you try to translate that with your partner, or if you even expect that from your partner, more often than not, I think उधर especially खवातीन की उधर resistance आती है, that then they turn back and they see that this is a huge infringement, that men are watching something which is not only an infringement over the relationship, but they're also sort of coming with that complaint, which is that they're watching something that is very deviant. और उस चीज को फिर बुरा समझा जाता है कि ये इनकी हमारे से जो expectations है, we're not willing to cater to those expectations, or those expectations are not even realistic to start with. इसमें एक इसका जो डेंजर है इसका पॉर्न का, वो ये कि एडिक्शन इसमें बड़ी इजीली आप प्रेडिक्ट हो जाते हैं. जिस तरह अभी तमीम साहब कहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो इसमें क्योंकि आप दिस इज अ सोलो एक्टिविटी यूजुअली, तो इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त के साथ टाइम नहीं सेट, कोई भी टाइम की जरूरत नहीं, आप किसी वक्त भी वेन एवर यू हैव टाइम आपने, और आप वो इस किस्म का वो एक क्विक सैंड है कि आप उसमें घुसते जाएंगे एंड विदाउट नोइंग आप बहुत आगे निकल जाते हैं. और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो सेक्सुअल हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होते कि आप कहेंगे क्योंकि मैं पॉर्न देखता हूँ इसलिए मेरा रिलेशनशिप खराब है. तो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, नहीं यार वो भी तो मेरे से सही सीधे मुंह बात नहीं करती, वो भी तो ये नहीं होता, वो अच्छा मैं क्योंकि मैं स्मोकिंग करता हूँ शायद उसकी वजह से हो गया. तो क्योंकि लाइक अदर सब्सटेंस आपका कोई लिवर टेस्ट से पता नहीं चलेगा जी आपका लिवर फेल हो गया, तो आप प्रॉब्ली ड्रिंकिंग करते हैं जो भी. तो इसका मसला ये है कि डायरेक्टली आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि पॉर्न की वजह से ये हो चुका है, तो आप उसमें घुसते जाते हैं. वन डे यू आर टू लेट टू गेट आउट ऑफ इट. दैट वी टोटली अग्री. उसके नुकसानात से कोई वो नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे अभी उमर ने भी कहा कि वी आर नॉट सेइंग के पॉर्न को हम ग्लोरीफाई करें और सारे देखें. व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमने उसको जरूरत से ज्यादा डिमोनाइज कर दिया है. एक्चुअली हमें ये करना है कि अल्टरनेटिव जो उसके अल्टरनेट्स हैं, जिस तरह आप जमीन कह रहे हैं कि रिलेशनशिप पे वर्किंग करें, तो रिलेशनशिप ना होने की वजह से सिर्फ पॉर्न का मसला नहीं है, आपकी डिवोर्सेज हो रही हैं, आपकी जो शादियां चल रही हैं वो भी सही नहीं चल रही, क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इवन वही फादर और बच्चा, माँ के साथ, किसी के साथ भी रिलेशनशिप का तो एक टोटल क्राइसिस है इस दुनिया में. तो उस पे भी वर्किंग करनी है. दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, पॉर्न. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना, यानी कि उसको आज आप ब्लॉक कर देंगे 100%, एक तो वो होगा नहीं, लेकिन उसको आज ब्लॉक करने से कोई फर्क दुनिया पे पड़ेगा नहीं. दैट्स ऑल वी आर सेइंग. डेफिनेटली आई विल नॉट गो एंड आस्क माय किड्स कि भाई देखो, खुल के देखो. हाँ, वी नीड टू टॉक एंड एजुकेट देम
यही सारी बातें कि वो जो कुछ है झूठ है, वो फैंटेसी है, वो क्लीशे के बच्चे जो हैं वो अगर पकड़े जाएं दंदन या उस पे प्रोहिबिशन होती है कुछ भी, वो एक उस चीज की, और फॉर द सेम वुड अप्लाई व्हिच इज दैट बड़े आई हैव हर्ड दैट डजन्स ऑफ टाइम्स दैट अ मेल क्लाइंट वुड से कि मेरी वाइफ ने जो है मेरा कंप्यूटर खोल लिया, उसने देख लिया, बट कभी भी उसका कोई फॉलो अप कॉन्वर्सेशन उसके बारे में नहीं होती दैट help me understand this habit, which is that what purpose does it serve? And lots of times again it does serve a purpose. For example, के एक मेल की अगर कोई legitimate भी fantasies हुए, they're not able to communicate those to their partner, which is that here is what I would like or not like or something like that. तो वो एक रिलेशनल उसके आउटकम्स में ट्रांसलेट ही नहीं होता, तो वो एक फैंटेसी जो है बिल्कुल एक डिस्कनेक्टेड रियलिटी उनकी जिंदगी की रहती है। और मुझे ये तमीम की बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट लगी है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी डिस्कनेक्टेड रियलिटी, उसको बेशक वीआर में हो जाए या बेशक टीवी के फॉर्म में हो या स्क्रीन में हो, कुछ भी हो, इट लैक्स दैट sort of three dimensionality जो एक relationship में होती है, or not only in terms of the senses, which is that at most porn is serving just visually and auditory उसमें एक stimulation है, it's not sort of tactile, it's not sort of sensing, it's not feeling, it's not smelling, it's not any of those things। वो जो एक हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और ऊपर से एक बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रियलिटी में कि इट कैन बी समवन ऑफ अ डिफरेंट रेस, इट कैन बी समवन ऑफ अ डिफरेंट एज, इट कैन बी समवन unrelated to you who may never even want to be with you, उसके साथ you're having such an intimate relationship, that is something which, let's say अगर उसका कोई भी आपके पार्टनर के साथ, if that meant that you're able to share something that this is how I would like to have a fantasy with you of some kind, whatever that is, वो अगर हो सके, then I would wonder that could even be something very good for that relationship। और let's say अगर parents जो instead of putting your children down, if you catch something on their phone or their iPad, अगर उन्होंने कुछ explicit content देखा हुआ है, then these are very important conversations to have कि what does it mean for the other person। जो तो मेरी बात की आई थिंक एक सवाल मैं राना साहब से पूछना चाहता हूँ। सॉरी जी पूछे। कर लें सर। सॉरी अच्छा, मेरे इंटरनेट अनस्टेबल। जी, सॉरी साहब लतीफ पूछ साहब, लें। आप कुछ बोल रहे थे। मैं सिर्फ राना साहब से पूछ रहा था कि ये सवाल बहुत जरूरी है जो आपने किया है, और उमर भी जो कर रहा था बच्चों के साथ, कि आई थिंक हम, मुझे याद है स्कूल में जो था ना, हम लोग को बताया जाता था कि मैं अमेरिकन स्कूल में था, मुझे याद है 5th ग्रेड में एक दफा लड़के लड़कियों को सेपरेट कर दिया था, और उन्होंने एक वीडियो चलाई थी, वाज ऑन सेक्स एजुकेशन। और बहुत ज्यादा आर्गुमेंट ये आती है कि उसूलन जो है ना, सेक्स एजुकेशन आजकल के जमाने खास तौर पे वो आइडियली वालदेन को देनी चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग एक तो कंजर्वेटिव और वालदेन के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। दैट्स जस्ट सेक्स एजुकेशन। बट इन टर्म्स ऑफ पोर्न, आपका क्या ख्याल है किस तरह हम, आई मीन बिकॉज यू नो यू आर द सीजन्ड फादर है, बच्चों के साथ अगर आपने फर्ज कर अपने बच्चे को पकड़ लिया टोटे देखते हुए, या और आपको, एंड देन यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम और हर, यू नो हाउ वुड यू गो अबाउट डूइंग दैट? अच्छा, सबसे पहले तो पकड़ लिया वाला मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि कोई फॉर मी कोई वो एक हमने भी इस तरह के काम किए हैं। तो डेफिनेटली अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ड्रग्स के साथ उसके साइड इफेक्ट्स, और अगर आपने कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, डिस्कस करने ज़रूरी है कि पहले तो मना करना है अपना, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके बाद करना। तो उसी तरह की ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है जिसमें ये वाली जो रियलिटी है, 14 साल का 10 साल का बच्चा, उसको वाकई नहीं पता कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और उसमें सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप उसको भी नहीं, आप भी नहीं बता सकते कि जी आपने लेट्स से साइज के बारे में या टाइमिंग्स के बारे में या बॉडी फिगर के बारे में, अब आप उस 10 साल के बच्चे को क्या बताएंगे? तो आपने उसकी वर्ड्स को यूज करते हुए आपने एटलीस्ट ये बताना है कि ये जो पॉर्न है, ये दिस इज नॉट रियलिटी। एटलीस्ट ये उसको बचपन से अगर वो देख रहा है, आपने मना तो करना है। आप ये तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, ना ही मैं ये करूंगा कि मैं उनको कहूंगा जी भाई देखो कोई मसला नहीं है। आई विल स्टॉप देम। जिस तरह स्कूल वगैरह में भी ये बच्चों के अपने भी जहन में होता है कि ये चीज़ जो है वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन अगेन इट्स अ डिफिकल्ट टॉक, बट मैसेज शुड बी के इसको आपने एडिक्शन नहीं बनाना, इसके ऊपर आपने डिपेंड नहीं होना, और दिस इज नॉट द रियलिटी। दिस इज जस्ट लाइक अदर सुपर हीरो मूवीज, दिस इज जस्ट अनदर सुपर हीरो और सुपर हीरोइन मूवी।
तो दैट्स माय टेक ऑन इट कि पकड़ के वही शेम में अगर आप लाएंगे, मैं इनिशियली मेरा स्टाइल वही था शेमिंग वाला, लेकिन आई फाउंड आफ्टर लॉट ऑफ लॉस के शेम और गिल्ट से जो है ना फायदा कोई नहीं है, जीरो फायदा। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बड़े ज़हीन होते हैं, वो समझ जाते हैं जो भी आप उनको, आप अगर उनको ये लगे कि आप उनसे ज़्यादा ज़हीन है तो वो आपकी बात मान लेते हैं और समझ लेते हैं। जी ये तो बिल्कुल अपने बच्चों वाली बात की है जो अपनी औलाद के साथ आप करते हैं, जो अच्छा करते हैं। आई ऑलवेज अपलॉड दैट, जिस तरह आप हैंडल करते हैं कॉन्वर्सेशन, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ नेविगेट। तो वो आई थिंक मैं यही ऐड करूंगा, लाइक दो तीन चीजें जो मैं ऐड करूंगा ये है कि यस दिस, इसके जहाँ प्रोज हैं वहाँ कॉन्स भी है, और कॉन्स को भी बात कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑफिशियली इंडोर्सिंग watching porn. We are communicating, talking about why people watch porn and what may be the benefits of watching porn. Even though बात ये है कि a good measure of looking at a particular behavior is it a long-term sustaining thing that leads you towards something, let's say somewhat productive and it's meaningful. तो जो तुमने बात की है वो ठीक बात की है उसने। तो वो उसके अंदर हमने उस चीज को ये देखना है कि ये बिहेवियर एक्चुअली किस लिए हो रहा है। दो तीन चीजें ये थी। एक तमीम ने शुरू में एक बात की थी एंड उसने कहा था कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन मैन एंड अ वुमन, यू नो, इन अ पॉर्न, एंड दैट्स यू ऑलरेडी नो तमीम, बल्कि तुझसे मुझे पता चला था कि दिस इज नॉट ट्रू। द कैटेगरीज और जो जॉनरास हैं, और अगर आप कोई भी पॉर्न साइट अगर आप खोल के देख लें, जो पहली कुछ एंट्रीज होती हैं, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, राइट। सो ये कैटेगरीज काफी ज्यादा आ गई हैं। एंड वंस अगेन इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो अग्रेसिवनेस वाला एलिमेंट डेफिनेटली इसमें बढ़ जाता है, और वॉयरिज्म वाला एलिमेंट है। एंड देन यू नीड टू एक्सप्लोर, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर fetishes, fantasies, which can be very detrimental. तो इसके नुकसानात डेफिनेटली हैं, बट इसमें एक दो सवाल भी हैं और इसका मैं जवाब भी जरूर पूछूंगा वेरी क्विकली कि डज दैट मीन कि वी आर नॉट अलाउड टू फैंटेसाइज, बिकॉज फैंटेसाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये फैंटेसाइजिंग इसकी एक एक्सट्रीम है जिसके नुकसान बहुत ज्यादा है, बट आर वी नॉट अलाउड टू फैंटेसाइज सर्टेन सिनेरियोज। और अभी तौसीर ने बात की थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ, जो बाद वाली डिस्कशन है ना, व्हेन वुमन कैचेस नहीं, चलो व्हेन फाइंड्स आउट कि पार्टनर और हस्बैंड इज वाचिंग पोर्न, एंड द डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स कि एग्जैक्टली चीज जो है वो मिसिंग है। और इसके अंदर भी एक जरूरी चीज ये है कि मे बी देयर इज समथिंग not necessarily missing, but it is something which has nothing to do with your partner. It's not all about your partner who is maybe unable to perform in certain aspects. Maybe it has nothing to do with you. Maybe it has everything to do with his want or need or desire to fantasize, right? तो वो इस चीज को मद्देनजर जरूर रखें। एक तीसरा पॉइंट था, वो ये था कि फॉर पीपल हु आर अनफॉर्चुनेटली एडिक्टेड टू पॉर्न एंड who may already know this, but if you don't, तो एक नो फैप अगर आप सर्च करें ऑनलाइन तो इसका आपको काफी बड़ा रिसोर्स मिल जाएगा। नो फैप इज बेसिकली अ स्लैंग वर्ड फॉर मेल मास्टरबेशन, राइट। एंड नो फैप इज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ कम्युनिटीज के काफी लाख फॉलोअर्स हैं। तो इसको अगर आप फॉलो करें तो उनकी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस एंड हाउ टू सॉर्ट ऑफ यू नो डिटैच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, उनकी कुछ स्टेप वाइज हैं। So I think they can be helpful, and I didn't know कि ये एक local community भी है पाकिस्तान के अंदर. I got to find out from another YouTuber who's incidentally a distant friend. उसने काफी अच्छा इसके ऊपर काम किया है, अहमद इमरान। उसने काफी इसके ऊपर जो रिसर्च किया और वहां से मुझे पता लगा था कि यार हमारी एक लोकल कम्युनिटी भी है पाकिस्तानी की, जो फेसबुक पे है। एंड इफ यू वांट टू sort of access that, maybe you can sort of access that and get help from the relevant guidelines that they're given to sort of quit this particular addiction if you are really in it, because it can be quicksand, it is a slippery slope, but not everybody will be addicted to porn if they start watching it. ये राना साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। You don't necessarily need to get addicted, but you don't necessarily want to experience it to find out. मैं ये भी साथ साथ कहूँगा, उसको एक्सपीरियंस करना आपके लिए जरूरी नहीं है कि सर मैं तो नहीं होऊंगा तो चलें कर लें क्योंकि उमर लतीफ साहब ने जो कहा था, ऐसी बात नहीं है। It's a necessary sort of
evil, मैंने ये वाली बात भी की है, उसके pitfalls के ऊपर हमने काफी discussion की है और वो काफी extensive हैं. It does affect relationships, it can, and expectations और fantasies और reality जो है ना वो कहीं जाके meet हो जाती हैं with regular exposure, वो हो जाती हैं. So it becomes difficult to sort of create that distance from them, and it can affect you. But also ask the question, what are you using porn for? Is it just pleasure, or is it something that gives you a release, which is not just sexual, but something else in your life, which causes you to regularly sort of watch porn? इस चीज को जरूर उसके ऊपर सोच विचार जरा करें. बड़ी गोल्डन बात की है आपने कि कल अगर आपकी वाइफ पकड़ ले आपको देखते हुए तो आपका डायलॉग ये होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी. ये आपको बचा लेगा ये जुमला. चलें जिसे रैप कहते अप तो हैं करें सर ये वाली एपिसोड. जी. व्हाट आर आवर लास्ट वर्ड्स ऑन दिस? I think Lateef ने बहुत अच्छा summarize कर दिया, and I completely agree with the assessment कि yes, there are pros and cons, but ultimately root cause क्या है. I think that's the key takeaway here. Figuring out Yeah. what the root cause is at the end of the day. Yeah. Totally agree. मुझे व्हाट स्टेइंग ऑन इज दैट कि एक जो डीमनाइजेशन इसकी अगर वो ना की जाए, देन उस इस हैबिट को जो है फॉर इफ देयर इज एनी वैल्यू इन दैट कैन बी रिटेन्ड, व्हाटएवर आर द डिफिकल्ट थिंग्स दे कैन बी कंट्रोल्ड. और जो हमने बिल्कुल शुरू में कोपिंग की रेगुलेशन की बात की थी, कोई भी अगर चीज़ जो है वो मैल अडेप्टिवली यूज़ की जाए, इट कैन इवन बी लेट्स से कि आप जब भी परेशान हो आप टीवी शोज देखना शुरू हो जाएं, या that can become problematic. So it entirely depends on its use and who and at what age and to what extent and what is the content. So for example, जो हम genres की बात कर रहे थे, बहुत सारे genres बहुत violent भी हो सकते हैं. And if let's say that if that is something that someone is viewing and that reinforces their sexually violent tendencies, or if someone is looking at porn which is with prohibited age groups, with minors, then those are obviously very problematic habits which need to be controlled, legally be controlled as well. ठीक हो गया. So let's just end today's episode. Thank you everybody for joining in. आपके कोई सवाल वगैरह हो इसके ऊपर, any particular questions, please feel free to ask. तौसीफ ने दरमियान में एक trigger warning भी दी थी. Once again, for people who are deeply affected by this, we are in no way trying to negate their experiences or God forbid make fun of them. ये हमारे बिल्कुल भी नीयत नहीं. Once again, we're talking about the other side of the coin, which is very important. And that's what we're trying to do. That's what we're trying to communicate, in the hopes and willingness to be able to process and find solutions to this. Chalein ji. Thank you everybody Please for follow joining our in today. page, And Bhai Chara, on Instagram, and follow the YouTube page ताकि आपको अपडेट मिल जाए जब भी हम नई एपिसोड. वी ट्राई आवर बेस्ट दैट हम सारों की आपस में अर्लीस्ट जब भी हम मीटअप कर सकें, एवरी 4 to 5 weeks हम कोशिश करते हैं एक नई एपिसोड हो. बट डू फॉलो अप आवर सोशल्स फॉर बीइंग अप टू डेट. All right everyone, thank you so much. Till next time.